हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री वाइब्स। आज मैं लेकर आया हूँ जनरल एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का ये अगला पार्ट यानी कि टेस्ट 3, जिसमें है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि MCIR, ICAR, JRF, SRF, PGPHD CET, IBPS AFO, एग्री MPSC एंड ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्री वाइब्स फैमिली में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, NABARD was set up on the recommendation of options are Shivaraman Committee, Narsimhan Committee, B. Hazare Committee and D.R. Gadgil Committee. So correct answer is option A, Shivaraman Committee. So हम देखेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ NABARD क्या है। NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD was established on 12th July 1982 in sixth 5-year plan. NABARD का फंक्शन क्या है? So NABARD is an apex development bank by Government of India with a mandate for facilitating credit flow for promotion and development of agriculture, cottage and village industries, and its headquarters is at Mumbai. Next question, CIMET is located at options Nigeria, Mexico, Philippines and Colombia. So correct answer is option B, Mexico. Full form of CIMET is International Maize and Wheat Improvement Center. यहाँ पर ऑप्शंस हैं नाइजीरिया। सो नाइजीरिया में क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर यानी कि IITA। नेक्स्ट ऑप्शन है फिलीपाइंस। सो फिलीपाइंस में और क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRI। लास्ट वाला ऑप्शन है कोलंबिया। सो कोलंबिया में कौन सा इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर यानी कि CIAT इज लोकेटेड एट कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शंस आर मीथेन, carbon dioxide, nitrous oxide and chlorofluorocarbons. So correct answer is option D, chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon is not a greenhouse gas. Main greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide. Next question, if a pest is confined to an area and occurs regularly, its infestation is called as, options are chronic pest, epidemic pest, endemic pest and sporadic pest. So correct answer is option C, endemic pest. If a pest confined to an area and occurs regularly, its infestation is known as endemic pest. So epidemic pest किसे कहा जाता है? Sudden outbreak of a pest in a severe form in a region at a particular time, it is known as epidemic pest. और sporadic pest किसे कहा जाता है? Pest occurs in isolated localities during the some period, is known as sporadic pest. Next question, white rust of crucifers caused by, options are Alternaria brassicae, Coccinia helianthi, Peronospora brassicae and Albugo candida. So correct answer is option D, Albugo candida. White rust of crucifers are caused by the Albugo candida. Other information देखेंगे, Alternaria brassicae causes damping off in cabbage or crucifers. दूसरा ऑप्शन है Coccinia helianthi, so it causes rust on sunflower. Peronospora brassicae causes the downy mildew in crucifers. Next question, the discrete distribution whose mean and variance are equal is, options are normal distribution, binomial distribution, Poisson distribution and chi-square. So correct answer is option C, Poisson distribution. The discrete distribution whose mean and variance are equal is known as Poisson distribution. Next question, most extensively grown rabi pulse crop in India is, options are lentil, red gram, chickpea and black gram. So correct answer is option C, chickpea is the most extensively grown rabi pulse crop. चिकपी का बॉटनिकल नेम है सिसर एरेंटिनम एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। लेंटिल है लेंस कुलिनारिस, इट इज ऑल्सो फैबेसी फैमिलीज क्रॉप एंड इट इज ऑल्सो ग्रोन इन रबी, बट चिकपी इज मोस्टली ग्रोन इन रबी सीजन्स। नेक्स्ट है रेड ग्राम और पिजन पी, बॉटनिकल नेम है कजनस कजन एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। लास्ट है ब्लैक ग्राम। सो ब्लैक ग्राम का बॉटनिकल नेम है विग्ना मुंगो and it is also belongs to family Fabaceae or Leguminaceae. Next question, 8 grams of oxygen is equal to, options are 0.1 mole, 0.5 mole, 0.25 mole and 0.125 mole. So correct answer is option C, 0.25 mole. So 8 grams of oxygen is equal to 0.25 mole. Next question, the unit of rural society is, options town, village panchayat, village and cooperative society. So correct answer is option C, village. Village is the unit of rural society. Next question, hard fruits of citrus is due to the deficiency of which nutrient? So options are nitrogen,
phosphorus, boron, and calcium. So correct answer is option C, boron. Hard fruits of citrus is due to the deficiency of boron, and boron also causes for the fruit cracking. And due to the calcium deficiency, bare disease in tomato is observed. Bare means blossom end rot in tomato. Next question. Particular day which has rainfall more than dash millimeter is called as a rainy day. So options are 2.7, 2.5, 3.0 and 3.5. So correct answer is option B, 2.5. Particular day which has rainfall more than 2.5 millimeter is called as a rainy day. Next question. Which property of soil cannot be changed? Options are texture, structure, fertility and productivity. So correct answer is option A, texture. Soil texture cannot be changed. So there are a lot of soil properties like soil structure, soil texture, porosity, chemistry, color, consistence, particle density, bulk density, permeability. हमारे ऑप्शन है टेक्सचर. सो टेक्सचर मीन्स व्हाट? Available percentage of sand, silt and clay in soil is known as soil texture and it cannot be changed. Next is structure. So arrangement of soil particles in soil is known as soil structure. Next is fertility. So ability of soil to supply the elements essential for plant growth, it is known as soil fertility. Next is productivity. So ability of soil to support the crop production is known as soil productivity. Next question. India ranks in milk production is options first, second, third and fourth. So correct answer is option A, first. India ranks in milk production is first. 20% of the world production is from India. अगर हम रैंक की बात करेंगे तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट, सेकंड यूएसए, थर्ड चाइना, फोर्थ पाकिस्तान एंड फिफ्थ ब्राजील. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 cubic equals to options are 28.32 liters, 30.48 liters, 30.12 liters and 4.5 liters. So correct answer is option A, 28.32 liters. 1 cubic equals to 28.32 liters. 1 cubic means 1 cubic foot of water flow per second is known as 1 cubic. Next question. Late sown variety of wheat is options are Sonalika, Arjun, Hira and Sonara 64. So correct answer is option A, Sonalika. Sonalika is a late sown variety of wheat. So normal sowing time of wheat is 25 October to 15 November and late sowing varieties are from 15 November to 5th January. Some characteristic of this variety. Sonalika is a high yielding variety, disease resistant variety and introduced in green revolution. यानी कि 1965-66 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था. नेक्स्ट है अर्जुन. सो अर्जुन इज अ इम्प्रूव्ड हाई yielding and released in 1973 and it is also resistant to the rust diseases in wheat. Next है हीरा. So हीरा is a short duration rice variety and it is released in 1990. Next है Sonara 64. So it is a dwarf variety and developed in Mexico. It is also high productive variety. Next question. Tetrasomic is options are 2n minus 1 minus 1, 2n plus 4, 2n plus 2 and 2n plus 1. So correct answer is option C, 2n plus 2 means tetrasomic. So यहाँ पर जो examples दिए वो है aneuploidy. So aneuploidy means the presence of an abnormal number of chromosomes in a cell. 2n minus 1 is double nullisomic, n plus 1 is a disomic, 2n minus 1 is a monosomic and 2n plus 1 is the trisomic. That means it having a extra chromosome. Next question. Precursor of indole acetic acid is options tryptophan, IBA, tyrosine and thymine. So correct answer is option A, tryptophan. Tryptophan is a precursor of indole acetic acid. IBA is a auxin and it is work as a rooting hormone. Tyrosine is a protein synthesizer and non-essential amino acid. Thymine is a nucleic acid and it is paired with the adenine in DNA. Next question. Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology is located at Ludhiana, Lucknow, New Delhi and Karnal. So correct answer is option A, Ludhiana. CPET is located at Ludhiana. लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी सिचुएटेड है. उसके बाद ऑप्शन है लखनऊ. सो लखनऊ में IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च है. उसके बाद CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है. CSIH यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का भी रिसर्च स्टेशन लखनऊ में है. एंड NBFGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में सिचुएटेड है. दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली में IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है. ICAR है. ICAR इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है. लास्ट ऑप्शन है करनाल. सो करनाल में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है और CSSRI यानी कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट करनाल.
नेक्स्ट क्वेश्चन, fruit of okra is known as options berry, capsule, lumentum and shizuoka. So correct answer is option B, capsule. Fruit of okra is capsule. हम बेरी फ्रूट की एग्जांपल देखेंगे। बेरी फ्रूट्स है ग्रेप्स, टोमेटो, बनाना, कुकुम्बर, पपाया एंड एवोकाडो। कैप्सूल्स है ओकरा, आंवला एंड कैरम्बुला, लोमेंटम, टैमरिन एंड ग्राउंडनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियर ऑयल सीड क्रॉप ऑफ इंडिया इज ऑप्शंस ग्राउंडनट, सोयाबीन, लेंटिल एंड मस्टर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में 46 to 51% ऑयल प्रेजेंट होता है, सोयाबीन में 20% ऑयल प्रेजेंट होता है और 40% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेंटिल में 46 to 48% ऑयल होता है, मस्टर्ड में 40% ऑयल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपने अभी तक इस एग्रीवाइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।